it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me, hanging in the corner with a nosebleed, high on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me, still trying to figure out the mind piece, looking for the love inside me, inside me. Sometimes, don't know why I feel that way sometimes. Yeah, yeah. The end. Think all we can say that on the weekend. Funny how I kinda like this life. Funny how I kinda like this life. Don't like this life. सो टेक्निकली खोलने के बाद इसमें ये ग्लास है, ये इसका चिपसेट है जो कि थोड़ा अलग है एक्टिवा 5G वाले उससे। ये इसका रिफ्लेक्टर यूनिट है, ये ग्लू से पूरी सील्ड थी विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर, थोड़ा गरम करके लूज करके निकाला। और ये कुछ बोर्ड को टाइट करने के लिए नट है, और ये रिफ्लेक्टर को होल्ड करने के लिए दो और यहाँ पे लगे हैं, एक इधर और एक इधर, जो कि बैक साइड में ये सील्ड थे लेकिन अब ओपन कर लिया है। हिंडर ब्रांड जो है मैन्युफैक्चर करता है TVS के लिए ये LED PCB, जिसमें ये है LED 3, नहीं ये है LED 1, ये है LED 3 एंड ये है LED 2। मुझे लगता है कि तीनों LED ही गड़बड़ हैं। तो ये है TVS जुपिटर की LED टेक जो OEM सप्लाइड हेडलाइट है, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिवा के वीडियोस हैं बट इसका किसी ने डाला नहीं। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि मैं अपने ओल्ड मॉडल जुपिटर में ये न्यू मॉडल का हेडलाइट यूज़ कर लूँ, जो कि अभी तक के इफ़ेक्टिवली नहीं पॉसिबल हो पाया। सो अगर कुछ इसमें मुझे प्रोग्रेस मिलती है तो आगे अपडेट करूँगा।